पूजा क्या है? माने भगवान बुद्ध की याद करना है और पंचशील से उसको पूजा करना है। ऐसा फूल और बत्ती और अगरबत्ती देने से पूजा नहीं होगा। जब तक हम कैरेक्टर अगर चेंज नहीं करेंगे तो फूल से और अगरबत्ती से नहीं हो सकता है। पंचशील है मानव का कैरेक्टर बनाने के लिए है, चरित्र बनाने के लिए है, हर मानव का सुख चाहना है। और मानव का ही नहीं बल्कि कोई अगर कुत्ता हो, बिल्ली हो या कोई भी चीज़ हो, उसको प्रेम और भाव से देखना है, उसको मारना नहीं। A 1,000 years ago, the teachings of Buddha had completely vanished from the Indian mainland. However, in the villages of Greater Himalayas, even today it is possible to encounter pristine village societies entirely dedicated to Buddhism. कितना मंदिर है यहाँ पे? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 है। 5 है। ये जोमो लोग का मंदिर, पारू लामा लोग का मंदिर, फिर नीचे ओ लुचेन तुलकू जी का मंदिर, नीचे वहाँ से नीचे लाइब्रेरी, वहाँ से नीचे फिर ओ लगांग कल जो पूजा हुआ था। Popularly known as Tibetan Buddhism, the Dhamma arrived in Tibet through China and spread through the length of the Himalayas along the Silk Route around the 8th century AD. तांत्रिक है, तांत्रिक। फिर ये पोथी पढ़ रहे ना, यहाँ पर पोथी का जो सूत्र आ रहा। There are so many things very similar between the Brahmanical rituals and Buddhist rituals, but the basic difference is all the Brahmanical rituals are being constructed on the concept of Ishwar and on the concept of Atma. And all the Buddhist rituals are originated from the concept of Niratma and Anaishwar. बुद्धिस्ट हैं ये, इनको बोलते हैं ये वैसा बुद्धा जी का वो रक्षा करने वाले काला रूपा देवी काली देवी मंदिर में
Through a strange twist of events, Buddhism has once more struck roots in its native soil. The film looks at some of the colors and shades of this re-emergence in modern India. With the Chinese subjugation of Tibet in 1959, there was a huge exodus led by His Holiness the Dalai Lama. Tens of thousands of Tibetans crossed over to India in a desperate effort to practice their faith without fear of losing their lives. It was a hard knock of the first noble truth. Life is suffering. Thank you. What is this? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Even before the arrival of Dalai Lama in India, Buddha's teachings had made a strong and a new comeback. The neo-Buddhists do not see the Buddha as a beatific mystic eternally meditating under a banyan tree. For them, he is a compassionate hero intensely engaged with the sufferings of the marginalized. Engaged Buddhism is the new battle cry. नहीं, लेकिन आप इतना जानता है कि बुद्ध धर्म हमारे लिए अच्छा है। कोई जाके भगवान को जाके बकरा काटता है, कोई मुर्गा काटता है, हमारा अच्छा होना मांगता है, उसको करके इतना सब होने वाला है क्या? खुद आदमी इंसान कुछ भी करेगा तो कुछ हो सकता है। क्या बोलते हो सर? सच है ना। I think the fascinating thing about the revival of Buddhism in India is that it's come back from the bottom of society, as it were. Whereas in the past, Buddhism has usually travelled by converting the kings, the nobles and so on, and then it's percolated down to the bottom of society. Here, it's the other way around. And I think this is absolutely fascinating because it shows that Buddhism has a social message, has a social relevance. On 14th October 1956, Ambedkar took his Diksha at Nagpur and became a Buddhist. Nearly 500,000 people from Dalit communities followed in his footsteps. This event recorded the largest single conversion in the history of mankind. लोग बहुत जत्थे जत्थे से जमा से आ रहे थे। भगवान बुद्ध की जय, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, ऐसा करके आ रहे सब लोग। करीब 2-3 लाख लेडीज थी और आदमी भी उतने थे। 4-5 लाख का सब बड़ा भारी जमा था। 14 एकड़ की जमीन पूरी भर गई थी, जगह नहीं थी करके पेड़ों पर लोग बैठे हैं, कहीं कहाँ पर बैठे, ऐसा बने। बहुत माहौल अच्छा था। तो बाबा साहब भाषण दे रहे थे। उस टाइम में पुरानी जगह थी वो, तो वहाँ पर सांप रहता होगा। एक सांप बाहर निकल आया। बाहर निकला है तो लेडीज़ ने करीब से वो सांप देखा, वो उठी नहीं, घबरा गई। पर क्या, तो सू 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 बोलने लगे। तो सू सू बोलते बोलते वो सांप भी निकला, गायब हो गया, मैंने बाहर निकल गया सू सू करते हुए। नहीं तो इतनी भगदड़ मचती, शायद हो सकता है कि उस दिन 200-150 आदमी मर भी जाते भगदड़ होने से। और उसके बारे में लिखा, every vantage place was occupied. It was a sieging mass of humanity ever witnessed in the history of Nagpur. उन्होंने ऐसा लिखा था। People very quickly dismissed the conversion as a political stance or a political move or for political benefits. Actually, there were no political benefits. When people became Buddhists, they lost the political and economic benefits they had until now. Morarji Desai just cancelled them basically in 1956. So there was no political benefit whatsoever from becoming Buddhist. So I think we have to look first of all at the psychological benefits of becoming Buddhist.
बुद्ध बोलते हैं 3 बात, अनित्य, अनात्म, दुख। अच्छी बात बोलने के लिए बोलना चाहिए, जरूर है, ये दम है। संसार का चित्र नहीं है। अज्ञान के कारण हम इसी में घूमते रहते हैं। जब अज्ञान बिल्कुल मुक्त हो गया तब यहाँ से संसार से बाहर निकलेंगे। संसार से बाहर निकाल के मुक्त हो जाएंगे। ईश्वर है, हवस का उदाहरण है, एहसान है, द्वेष का उदाहरण है, ये भटक है, ये सतुल का उदाहरण है। ये 3 हमारा मन में होने से हम कभी संसार से छुटकारा नहीं पाएंगे। ये अज्ञान सब दूर हो जाने से हम यहाँ इस संसार से बाहर निकलेंगे, जैसा गौतम बुद्ध। Perhaps the worldly distractions are all too tangibly felt in our urban lives. The city offers a labyrinth of cravings and expectations for the bored or the lonely soul. It promises a journey to the land of ultimate fulfillment. We keep chasing these promises on and on. Dude, what a rocking car. It's my love. Love is sinking. Wanna ride? A hard knock of another inescapable truth. Everything is impermanent. The youth of modern India were introduced to Buddhism through textbooks and museum displays. For most, it was a religion that had at some point in history migrated to foreign lands. It was a past phenomena that had been solidly relegated to history.
light dawned on the horizon in India in 19th century, when British archaeologists and explorers started bringing to light the Buddhist treasures hidden under the dust and debris. But this place, I feel it is very, very beautiful. That little things, how they break it on such a big wall and how they stayed, and it was really like a miracle. They discovered over 1,000 Buddhist sites across Jambudvipa, the Buddhist name for the Indian subcontinent. It indeed takes a leap of imagination to configure the Buddhist India of early ages. Gautama, the Buddha, realized ultimate fulfillment in nirvana, and he envisioned mastery over the mind as the path to it. These caves in Western Ghats of India were born out of such a vision. Today, they offer a vivid and a detailed account of monastic development across 1,000 years. The breathtaking architecture by itself is a testimony to the highly evolved dialogue between mind and matter. These caves occupied a prominent place in the history of Buddhism round about, say, 1st century BC. It is said that probably 80% of the population of Maharashtra was Buddhist at that time. So it was a new religion, new fervor. People came forward and embraced the religion. Monks were there all the time to guide, as I told you, not only in sacerdotal or other worldly matters, religious matters, but probably they must have served as catalysts for urbanization. The monks lived in very simple residential caves, sometimes 2 or 3, then sometimes surrounding an open courtyard. And their only requirement was shelter and a calm place for meditation. They naturally required water. And that is why we'll find in these caves, there is always a small water cistern which is provided. Till his dying breath, the Buddha urged people to find out the truth for themselves. He asked them not to submit to any external authority or to blind faith. Buddhism welcomed logic and was very open to debate. It questioned every aspect of existence and perception. This tradition of debate and argumentation still carries on. The more doubt that you have, the more you will gain an inner understanding of what the meaning is behind the words. If you don't have that doubt, then you will just take the words for granted and you will not really understand what the meaning lies behind them. So the debate really takes the essence, gives you the really understanding of the meaning behind the words in the text. In the first years, you start out just in the general topics, like collected topics and mind and so on and so forth, just to learn how to debate, how to develop the tool of debate. After you develop that, then you go on to the great, the great Indian texts, and you study in depth the meaning behind the Indian text using the tools that you have developed.
in the initial stages, in the initial years of studying, and so on and so forth. Milind Prashna, a 1st century text, highlights the conceptual framework of Buddhist thought. This is brought to the reader through the deep questions of King Milind and the wise answers of Nagsen. Nagsen helps Milind to discover how reality is constructed through language. My God. Unable to deal with the painful sense of loss, our King Milind searches in vain for her car. Everywhere in the disintegrating heap of metal she looks. But how can one find a concept? Nagsen riddles the frustrated king. What was this car in the first place? Was there a car at all? Oh my car. कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही तुम्हारी कार। ये स्टीयरिंग है तुम्हारी कार? स्टीयरिंग व्हील नहीं बनते। ये एक्सेल? ये तुम्हारी कार? नहीं बनते। ये हवा ने तुम्हारी कार? नहीं बनते। नहीं? तो ये ब्रेक? नहीं बनते। ये भी नहीं? तो ये लाइट है तुम्हारी कार? नहीं बनते। तो ये पहिया? नहीं बनते। ये पहिया? ओ मेरी कार, ये कारों का कब्रिस्तान। महाराज, आपसे पूछते पूछते मैं थक गया, किंतु ये समझ नहीं पाया कि आपकी कार है कहां। तो सुनो महाराज, मेरी कार पुकार रहे हैं, किंतु ये बता नहीं सके ये कार है कहां। मैं झूठ नहीं बोलती भंते। स्टीयरिंग व्हील, हेडलाइट, गियर, ब्रेक इत्यादि पार्ट पुर्जों की असेंबली को कार नाम से पुकारा जाता है ताकि प्रैक्टिकल लाइफ आसान बन जाए। हाँ। जैसे पार्ट्स पुर्जों के आधार पर कार एक नाम तय होता है, वैसे ही अलग अलग एस्पेक्ट्स के होने और जुड़ने से एक जीव या इंसान समझा जाता है। एक से एक जुट के संसार बन जाते हैं। जैसे नागसेन को पूछा तो वो कहता है ये रथ चक्का रथ है क्या, कि ये सीट रथ है क्या, ऐसे आज की भाषा में कहे तो ये मोटर का व्हील रथ है क्या, उस स्टार्टर रथ है, इत्यादि इत्यादि। वो मिल करके सारा जुड़ा तो एक रथ कहने लगे, नाम पड़ गया रथ। और रथ क्या होता है? ठीक इसी प्रकार ये हमारा शरीर और ये मन, इन दोनों की मिली जुली जो व्यक्तित्व है उसको नाम देते हैं ये व्यक्ति है। कहने की बात है केवल, और कोई अलग व्यक्ति नहीं। ओ मेरी कार, मैं मिलिंद भी एक संज्ञा और मेरी कार थी, अब है कहाँ? सिर्फ मेरे माइंड में। All the major events in Buddha's life happened in nature. His birth, his enlightenment, and his death. It could be said that nature was his constant companion and he observed it meticulously like a scientist. Buddha had developed the technique of vipassana meditation to investigate the ever-changing nature of mind and matter. यही बुद्ध की शिक्षा थी। क्या विपश्यना होती है? विपश्यना कहने का मतलब देखना,
और देखने का मतलब होता था उन दिनों भारत में अनुभव करना। In 1969, Vipassana was reintroduced in India by Sri Satyanarayan Goenka ji, an Indian residing in Burma. It arrived from Burma, where it has been in practice in its original form since the time of Ashoka the Great, 3rd century BC. He was a super scientist of the spiritual world. सच्चाई क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट किया, खोज की उसकी, किसको मैं किए जा रहा हूँ, किसको मेरा किए जा रहा हूँ। नो दाई सेल्फ कहने वाले बहुत हुए, पर ये नो दाई सेल्फ करना सिखाता है। बिना किसी साइंटिफिक अपरेटस के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के 2600 वर्ष पहले उस आदमी ने अपने भीतर अनुभव करते 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 जान लिया कि ये ठोस लगने वाला शरीर ठोस बना है ही नहीं। The entire material world, there is no solidity at all. Mere wavelet, सबो लोको पकंपितो। तब उसने जाना, और सारा मटेरियल वर्ल्ड हमारा शरीर समेत नन्हे नन्हे परमाणुओं से बना है। The best thing about Vipassana, it's very universal. You work with your natural breath and your body sensation. Because it's so natural and there's no mantras or chanting, I think to get to the core of mental purification, you need to start to look into yourself and not look externally. Just like myself and my family members, we've all benefited from it, and to be honest, we've actually found inner happiness and peace. And it may sound cliche, but it is from experience that I can tell you that from myself and my family members. The whole experience for me has been about finding a direction of a path by which I could see inside, where I was just observing, seeing new sides of me, understanding or trying to accept sides of me, and understanding the world around me. It has helped me understand a lot more about how to do things or how not to do things, or also to realize that everything shall pass. The difference I found immediate was the reaction of people around me, how people were reacting to me as a person who just finished the course. There were people telling me that I look different, behave different, but the most stark example and even a funny example that I can give was the very first day when I came back and I was taking an auto rickshaw back from Janpat in Delhi to a particular point. I got out of the rickshaw and the auto driver refused to take money from me. He said, "I don't want to take money from you because you're such a beautiful person." I don't think it was like a command dialogue or anything. I think he really meant it. By 2nd, 3rd century AD, all the Buddhist monks, they do not move all the 12 months of the year, and these become permanent residential units. And then later on you will find that with this coming up or mixing of the monastic unit or the residential unit and the prayer hall, we find now totally different types of units which are coming up. And in that, the narrative scenes, different mythological scenes, they are depicted within the monastery. By people identifying themselves as Buddhists, they made the first psychological step against this. We're Buddhists, we're not untouchable. So I think this in itself was a tremendously freeing step forward. बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मैंने अपने आप को संकल्प लिया, क्योंकि समाज में जो रूढ़िवादिता है वो पूरी तरीके से घर कर चुकी है, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अंधविश्वास बहुत है। उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए, या अंधविश्वास से जो वहाँ का मानव ग्रसित है, तो उस वातावरण से उभरना नहीं चाहता है, उस उभरने के लालसा में मैंने प्रयास किया है। I want to become a good man. I want to be a gentleman. I am proud of myself to become a Buddhist. To be a Buddhist. चलो अंकल, चलो अंकल, चलो। हमारे भगवान का झाड़ है। झाड़ भगवान का। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध,
कौन अच्छा गाता है? ये बहुत अच्छे गाती है। ये लड़की बहुत अच्छे गाती है। बोलो, बोलना बोली। करण, करण लोग, करण नंगा आदमी बंडो बजाए। ओ मत निकालो। बोलो बोलो बोलो। आदुले तू काय नाही बोला तर बोलून दे त्याला। बुद्धं शरणं गच्छामि ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि. They have a very strong faith in Ambedkar. This faith is a positive faith. It's a faith based on their experience of him, of what he did for them as a community throughout his life. So when he encouraged them to think about Buddhism, they said, yes, everything he's done until now has been for our benefit. We must think about this seriously. It must be very important. Not blind faith, it's faith based on confidence in the man. शोषित पीड़ित तबका है वो बाबा साहब के नाम को लेकर बहुत बड़ा दीवाना है। वो जय भीम में अपनी आस्था व्यक्त करता है। जय भीम को एक क्रांति मानता है, एक आंदोलन मानता है। वो अपने आप में बदलाव की भावना देखता है। साधु साधु साधु। सर जी, ये जेल की जो कस्टडी है, ये कोर्ट का फैसला है, ये इसका कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ हमारे दिल्ली का कानून है, ये कितना टाइम लगा देता है, क्या करता है, इसका कुछ नहीं पता। मैंने कोई मर्डर नहीं किया। मैं सर 1984 में जो दंगा हुआ था, दंगों में मैं इन्वॉल्व हूँ। जिसके मर्डर में सज़ा काट रहा हूँ वो जिंदा है और मुझे सज़ा मिली है। हम तो है दुख खराब कि उन्होंने हमारे को ज़बरदस्ती कैद करवा दिया। कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं। When you need to come, you need to come. When you need to go, they cannot keep you. A properly trained mind is capable of insights and intuitions that can liberate one from learned and mechanistic behavior patterns. It can free us from the prison of words. नज़रअंदाज नहीं करना सिखाता बुद्ध, बुद्ध देखना सिखाता है। ये इतने अपराधी, खूंखार अपराधी जो जेलों में है, कैसे बदले। हमने शिविर लगाया तो जब उनको 3 दिन के बाद उनको संवेदना मिलने लगी, बॉडी में सेंसेशन मिलने लगी, तो हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पर विचार आता मन में कैसा आता है। तो ईमानदारी के साथ वो कहते हैं कि हम बाहर निकलेंगे तो पहले वो जज को मारेंगे जिसने हमको हमारे खिलाफ फैसला दिया। जब वो अपनी गाड़ी से निकलेगा कोर्ट के बाहर तो स्मैश कर देंगे उसको। इतना गुस्सा है मन में। उस आदमी ने हमारे खिलाफ गवाही दी, उसको मारेंगे, इसको मारेंगे। जब तुम्हारे मन में ऐसे विकार जागते हैं, इस तरह की बातें जागती हैं, तब शरीर में सेंसेशन क्या होता है बोले तो नहीं देखा कभी। अभी देखो तो देखता है तो जलता है सारा शरीर, धड़कन बढ़ गई। तो हमने कहा दुखी हो ना। वो जब ऐसा होता है तो तुम दुखी हो जाते हो ना। दुखी तो हो जाता हूँ। अरे तुम तो न जाने कब मारोगे कि नहीं मारोगे, तुम अपने आप को अभी मार रहे हो, अपने आप की शांति अभी ख़त्म कर रहे हो। तुम कर क्या रहे हो? तब होश आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसा चिंतन ही खतरनाक है। मारूंगा तब मारूंगा और फिर तो मारना ही भूल जाता है। काहे का मारूंगा? प्यार जागता है, करुणा जागती है। In Buddhism, there is no concept of original sin. Negative states of mind are a result of the ignorance of the nature of reality. But do we dare enter the depths of our own darkness? Can anyone honestly say that thoughts of passion, greed and violence have not crossed his or her mind? मैं इस अंतिम सजा को ये समझता हूँ कि हमारे जो पूर्व संस्कार कुछ ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से ये फल आया है, और इसको मैं विपश्यना मिलने के बाद खूब हंस करके काट रहा हूँ। कोई परेशानी नहीं है। 1993 में विपश्यना मिली, किरण बेदी जी लाई यहाँ, और पहला कोर्स मैंने 2 नंबर जेल में किया और उसके बाद कोर्स करता ही रहा। फिर जैसे जैसे इसमें पकते गया तैसे तैसे बिल्कुल इससे छुटकारा मिलते गया अपने दुख से। ना दुख के लिए रोना है
अन्न सुख के लिए चाह करना है। We don't know our destiny. Maybe it was part of my destiny to come to TR, to learn about maybe Vipassana or to realize myself more. So we don't know if it's really accident or what is exactly. But in reality, we need to face the present life. So it's what I try to do. मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जेल में आना नुकसानदायक नहीं है। 3 साल मेरे जेल में आना मेरा सफल हुआ। 3 साल नहीं, मेरा पता नहीं मुझे अभी कितने जन्म का सफल हुआ, लेकिन मैं इस विद्या को भगवान शक्ति दे मुझे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति दे, मेरे को सद्बुद्धि दे और मुझे उस प्रज्ञा का मार्ग पे चलाए। मनुष्य एकमात्र केवल पतंग है। पतंग की जो श्वास नाम की जो डोर है वो कुदरत के हाथ में है। जब ये श्वास नाम की डोर कुदरत के हाथ में है और वो जब चाहे वैसे उसको नीचे ऊपर कर सकता है, तो मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। With Vipassana, you also break many barriers of the mind, you know, and you can go more deeper and deeper. By going deeper, also you need to leave many things in the side, what is not easy for normal people, we can say, because they have a craving for, can say, luxury life or so many things. But in jail, we already live like a monk. Our program daily living is like a monk. तो एक अभी ट्रेनिंग पे चल रहा हूँ, अच्छा महसूस हो रहा है और आगे के लिए ट्रेनिंग पे ही चलता रहूँगा। मैंने निश्चय कर लिया है कि साधना विपश्यना कभी नहीं छोड़ूंगा। अभी और इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहता। अभी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। गुड इवनिंग बनते। गुड इवनिंग। हमारे मन में एक सवाल उठा है। फरमाइए महाराज। आज जो आप हमसे मिल रहे हैं, क्या वही हैं जो हमसे कल मिले थे? ना मैं वही हूँ और ना ही दूसरा। एग्जाम्पल देकर समझाइए। पहले मुझे कैंडल लाइट डिनर की दावत दीजिए। श्योर बनते। टेल मी, ये कैंडल्स जो ये मंक्स जला रहे हैं या जो यहाँ जल रहा है, क्या ये सारी रात चलता रहेगा? यस बनते, रात भर चलता रहेगा। और रात को जो फ्लेम 12 बजे पे जल रही थी, क्या वही फ्लेम 1 बजे, 2 बजे या 3 बजे भी जलेगी? नहीं बनते। तो क्या जो लैम्प, फ्लेम नहीं, लैम्प 1 बजे जल रहा वो एक था, और जो 2 बजे या 3 बजे जल रहा था कोई दूसरा या तीसरा? नो बनते, वही लैम्प रात भर चलता रहा।
उसी तरह जिसे हम बहुत ठोस मान लेते हैं, वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पार्टिकल्स और वेव्स का कुंड है। हर शय ठीक इस लॉ की तरह बड़ी तेजी से उत्पन्न होता है और नष्ट भी। ये अराइजिंग और पासिंग में एक क्षण का भी अंतर नहीं होता? नहीं महाराज। तो क्या हम अपने ठोस बॉडी को कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वेव्स और पार्टिकल्स की तरह महसूस कर सकते हैं? अगर कोई सीरियसली ध्यान लगाए या मेडिटेट करे तो बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। First century BC to about 11th century AD, this center prospered. And it was common people, traders, florists, hiranyakaras, that is goldsmiths, even priests, Brahmins, they have made contributions here. Not only that, women came forward. It is only up to 5th century AD that we find names of women as donors. After 5th century, you don't get them. So there is a social change. So it tells you about the history of our society also, that after 5th century AD, women did not have that type of, you can say, freedom, that type of high status, wherein they could come forward and give donations and patronize caves and other religious activities. Indian art and culture had reached a high point around the 7th century AD, and Buddhist inspiration was one of the most significant propelling forces. Ironically, it was also the beginning of its decline. सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म सारे भारत में फैला, घर घर में बुद्ध की शिक्षा चल पड़ी। लेकिन अशोक के 50 वर्ष बाद देश का बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि एक विदेशी व्यक्ति देश का राजा बन गया। अब जो विरोधी थे बुद्ध की शिक्षा के, उनको साथ लेकर के उसने धर्म को नष्ट करना शुरू किया। तो धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में बुद्ध की वाणी का एक शब्द अपने यहाँ नहीं रह गया। Everything goes with the causality, and that is a fact. And in India, the immediate cause for disappearance of Buddhism and Buddhist literature and Buddhist monasteries were due to the invasions of the Muslim invaders in India. They destroyed almost every Buddhist monastery in central India. And at that time, I think the very sectarian Brahmanical community was also silent, and perhaps they give moral support to the Muslim invaders to destroy the Buddhist institutions. Buddhism argues really systematically for these ideas that are common in all religions, and gives really practical and down-to-earth and systematic ways and logical ways of how you can achieve these goals. And the more you explore it, it's a bottomless well. It's not about being a Buddhist or being a Sikh. It's all about following you finding yourself and finding the truth within yourself and becoming a better person. Because if you're a better person for yourself, those people around you, you can be better for them as well. And it makes a community more happy to live in. Each person is responsible for their own salvation and their own, my own karma is it's because of my duty and the hard work that I put into it. It's not some unnamed God who's just going to save me.
I have to save myself. $2,500 years ago, the people of Jambudvipa were drawn towards the Dhamma. The Buddha's teachings spread out to the world. Many became monks, and many more among the laity followed his teachings. The Dhamma was beneficial for all, for the poor and for the prince, and that was the chief source of its popularity. The history of the spread of Buddhism is a record of kindness and selfless service. To practice Buddhism does not mean you need to convert yourself as a Buddhist. Religion or the Dharma has no boundary. A follower of any religion can remain his or her own religious tradition, yet acceptable things, the good things in Buddhism, you can take it. The Dhamma of the Buddha has negotiated many a turbulent moment in its journey from antiquity till now. It has always been forgiving, extending compassion even to its adversaries. The teachings of the Enlightened One time and again has illustrated to the world that love and compassion have no substitute. No wonder, in a world that is increasingly becoming materialistic and insecure, more and more people the world over are turning to the words of the great sage. Buddha's last words were to a gathering of his disciples, and he said, "Behold, O monks, this is my last advice to you. All component things in this world are changeable. They are not lasting. Work hard to gain your own salvation.